Hello and welcome to Northeast Interface coming from the city of Imphal, the capital of Manipur. This state produces the best talent in Indian sports. Be it hockey, be it football, be it wrestling, be it weightlifting, archery and judo. This state has produced many talented sports persons. And in this episode, we intend to find out what is it in Manipur that attracts so many sports persons. Sushila Likmabam received at the airport after winning a silver medal at the 20th Commonwealth Games in Glasgow. Sushila won a medal on the first day of the Games itself in 48 kg category. The Manipuri judoka began her campaign by thrashing M. Medza Effa of Cameroon in just 1 minute 41 seconds before knocking out A. Maya of Australia in similar fashion in the quarter-finals. She then made it to the final after another thrashing of a semi-final opponent C. Raina of Australia in an Ippon verdict in the 3rd minute. However, she lost to Scotland's Kimberly Rennicks in the final, who was egged on by her home fans. We followed her to her home, where a banner expressing Manipuri pride welcomed her. We have with us Sushila Devi, the person who made the country proud by winning silver medal in the 48 kg judo category in the current Commonwealth Games held in Glasgow 2014. मेडल से कि इंडिया के लिए सिल्वर मेडल जीत के आया, पर बहुत अच्छा लगा। पर गोल मेरा टारगेट था कि गोल ले लूँगी, पर जो मेरा सपना था वो पूरा नहीं हुआ। पर खुशी पूरा नहीं हुई, पर खुश तो हूँ मेडल लेके आया। कोई नहीं, तो अब आप क्या प्लान्स है इसके बाद आगे के लिए? जो मैंने सिल्वर मेडल लेके आया वो मेरी कमी की वजह से सिल्वर मेडल आया, तो और मेहनत करके मैं आगे पूरा जीत के गोल्ड मेडल लेके आने के लिए। तो वो क्या कमी रह गई आपके उस पे कि आप गोल्ड नहीं ले पाए? कमी में कॉन्फिडेंस कमी था थोड़ा, इसकी वजह से। बहुत सारे लोगों ने मुझे बहुत मेरे लिए सब खुश हैं, घर वालों बहुत खुश हैं। जो मैं यहाँ तक आई हूँ, मेरे घर वाला मम्मी पापा नहीं होता तो मैं यहाँ तक नहीं आता, तो उन्होंने मेरी बहुत किया, मम्मी पापा ने, इसकी वजह से मैं यहाँ तक आई हूँ। तो आपके रोल मॉडल कौन है? तो आप ये अपना जीत का वो आप किसे देंगे, श्रेय किसे देंगे? जहाँ तक मैं, जो मेरा चाचा है वो अभी भी एनआईएस करके पटियाला से अभी डिप्लोमा ख़त्म करके आए हैं। वो एल दिनेश सिंह, वो खुद जूडो प्लेयर्स है, वो भी दिल्ली में रहते, बीएसएफ में इंस्पेक्टर है, और उन्होंने मुझे जूडो में लेके आया। उसके बाद मैं इम्फाल साई हॉस्टल में 2005 से मैं साई हॉस्टल में थी, सावित्री मैडम एंड मोइरांगथम देवेन से। उन दोनों की पीछे मैं प्रैक्टिस करता रहा। उसके बाद मैं 2010 में पटियाला एक्सलेंसी चले जीवन शर्मा, उन्हों के साथ मैं अभी भी उनके साथ प्रैक्टिस करता हूँ। तो अब नेक्स्ट आपका क्या प्लान है? अब कौन सा नेक्स्ट टूर्नामेंट कौन सा है जिसमें अब आप रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को? अभी टारगेट है, कंपटीशन तो है, पर अभी मेन टारगेट एशियन गेम्स पर है। I am so happy to get the medal in Commonwealth Games, and I hope as a Olympian player I am so happy. ꯑꯩꯅ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯀꯃꯟꯋꯦꯜꯊ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ, ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯒꯣꯜꯗ ꯃꯦꯗꯜ ꯂꯧꯔꯛꯑꯃꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯦꯟꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯅ ꯋꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯛꯄꯒꯤ ꯁꯤꯜꯚꯔ ꯃꯦꯗꯜꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯋꯥꯕꯒꯤ ꯋꯥꯖꯃꯟꯒꯤ ꯃꯍꯩ ꯈꯤꯇꯪ ꯐꯪꯉꯕꯣꯏ ꯅꯤꯡꯖꯩ, ꯐꯪꯉꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯇꯨꯡꯒꯤ ꯒꯦꯝ, ꯑꯦꯁꯤꯌꯥꯟ ꯒꯦꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯣꯂꯦꯝꯄꯤꯛ ꯒꯦꯝꯁꯤꯗ फजना कहो तौन गोल लौरक्नबा हाइना मयामदा। मम्मा सबको कहना चाह रही कि जो मेरा सिल्वर मेडल आया, तो दुख भी है कि गोल नहीं आया, पर बहुत खुश है कि मेरे लिए मम्मा ने मेरे लिए इतना स्ट्रगल किया, तो थोड़ा गोल तो नहीं आया, फिर भी बहुत अच्छा लगा। सबने हमारी साथ दिया, तो मम्मा बहुत खुश है। तो आगे के लिए एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए गोल आएगा, ये उम्मीद है। तो मैं बहुत खुश हूँ ऐसे इतना बड़ा गेम्स में मेडल आया इसका। हमारा परिवार, माँ बाप भी खुश है, मैं भी बहुत खुश हूँ। ये नेक्स्ट एशियन गेम्स खेलने जाना है, वो भी इसमें भी गोल्ड मेडल आने के लिए कोशिश प्रैक्टिस करवा दूँगा इसके साथ। जो मेरा कमियाँ थी उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया। हाँ, पहले मैं साई हॉस्टल में मिस्टर दिवेन और मैडम सावित्री की उनके साथ प्रैक्टिस करता था। उसके बाद मैं 2010 में पटियाला सीओई में आ गई, और मिस्टर जीवन शर्मा हमारे सर, उनके साथ मैंने ट्रेनिंग किया। तो जो भी पहले मेरा कमी थी,
तो उन्होंने सब कुछ मुझे सिखाया और लाइफ में क्या क्या करना है, आगे जाके क्या नहीं करना, मुझे उनके साथ रह के मैंने सब कुछ सीखा. Still, she's very young now. She's really trainable. She has very long way to go up. I think we need to train her. We need to have more this thing. We need to have serious this thing training to her, like especially motivation side. So like psychology, sports psychology is very much for her because she just go on the mat and just fight, you know. Okay. So we need to put some knowledge regarding the sports psychology. She needs more exposure and she needs some motivation, like giving job, offering job. Now she's jobless now. Just a top player having no job and her family also not in the good condition. So we need to beg up her by giving some good job. Maybe if it is possible in the state government. Okay. Yes, okay. Contact sports and martial arts are disciplines in which the Manipuris excel. We have enormous talent, but what we genuinely feel is that we should narrow down the focus on some disciplines where we think we are extremely good, genuinely good, and we have medal potential, especially at the Olympic Games and Asian Games and at the Commonwealth Games. And this would include some of the contact sports we already have proven, for example, weightlifting, for example, then boxing, then judo. So these are the areas where we think that we have potential, medal potential at the international events. So for this, at the National Sports Academy, we have 5-6 disciplines, and we will be focusing on these events. And hopefully from next year or end of this year, we will be inviting coaches, foreign coaches, to have residential camps, and we will be organizing district level talent hunt. So what about the other sports? For instance, wushu and taekwondo, where Right. I visited the complexes and Right. I Right. personally saw the Right. potential there. Right. So what are you mulling to do as an Absolutely. Like you've just mentioned wushu and taekwondo. See, taekwondo and wushu, they are not Olympic discipline as of now, but hopefully we're expecting that they will be included. As you know, that International Olympic Association, they also keep shuffling every new items, keep including in every new Olympic Games. So we're expecting, and plus this is one event where we think that with our physical our flexibility and especially agility and all these contact sports like you have just mentioned, wushu, taekwondo, even say for that matter sepak takraw is one of the event where Manipur have dominated over the years. So this is where we think that we should focus on this. Definitely they are very much in our radar. So like an example, in India, I would say Haryana, take an example of state of Haryana. Haryana is normally good in producing wrestling and boxing. And they have a history also, because if you go to the villages of Haryana, they play kushti. So that's how it helps. And their bodies are built in such a fashion that they're not so mobile, but they are good for all these events. And internationally also, if you look at countries like Jamaica or Cuba is very good in producing boxing, good boxers. In Jamaica in sprint. Yeah. So I think we should focus on areas where we are extremely good at it, and because with the limited funding that our state has, so it will be better if we could focus on the events which we're extremely good at. And this does not mean that we will be completely neglecting other sports. We will not be doing that, but it's a matter of preference, a matter of giving priority. So priority should be on the events, disciplines where we have medal potential, especially at the Olympics and the Asian Games and also the Commonwealth Games. See, since from the National Games, 33rd National Games, Guwahati, Manipur in the medal tally of Manipur team, there was 15, no less than 15 gold medals. Forget about this silver and bronze. We have contributed 15 gold medals. And in the same way, in the Jharkhand's 34 National Games also, Manipur Wushu team contributed 15 gold medals. And so, all other sports disciplines, which is, not so, doing not so good, they have more than 2-3 coaches in the department.
In fact, my service is in the Manipur Secretariat. I am Principal Private Secretary to the Government of Manipur. But since there is no coach of Wushu, is appointed by the Government of Manipur, and Wushu is doing very well, I'm just sacrificing my life as a Wushu coach. I'm acting as a Wushu coach, I'm not a Wushu coach. Wushu is two divisions, as you have seen. This part is Taolu, this part is Sancho. We're doing in this, very good in both the divisions. So at least Government of Manipur need to appoint 2 regular coaches. See, I'm not so young, as you have seen. No, I'm not. My age is, I'm puckering 60. After my, what you call, if I am unable to, impart training, who will do this? Wushu is, literally, Wu means war, Shu means art. It's originated from China. So Wushu is, in particular, Wushu is martial arts. And which is a very, should to, Manipur, just like Mongoloid group type of physical structures. So it is a very, useful sport for self-defense and also a very, good competitive sport. For self-defense, I should say, is the best. Nowadays, there are a lot of crimes against weaker sections, crime against women, girls. If my girls, you can find my girls' performance. If we can train, in the school, colleges, we can train. Government is plan to train, these girl students, then they can automatically protect themselves. And I hope that this type of crime will be lesser if they train Wushu well. Taekwondo is a kind of martial art, but nowadays it is quality sports included in Olympic discipline. This is a combat style. We kick and punch. We can get a score for kicking. There are four score for round kick. Rounders kick means turning kick to the face, and 2 points for the chest level, and one score for the just kicking to the chest level, and punching we can get one score to the punch to the chest level, not the face. I'm coaching around 10 years. I produce international 4-5 international players, and national players something 40 around 40 sub junior seniors. So how many players do you coach at present? How many students do you have? I have in this session only 57, but last session I produced 104 players. So how are they performing till now? These are mostly beginners, but the last players they are performing in international level also. They are one of players. My players got a bronze medal in Commonwealth Games. मैं इंडिया के लिए रिप्रेजेंट किया हूँ एक वर्ल्ड चैम्पियनशिप इजिप्ट में और एक एशियन चैम्पियनशिप इंडोनेशिया में हुआ है 2 तो इंडिया में हुआ था एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप उसमें गोल्ड मेडल मिला हूँ और एक ओपन इंडियन ओपन खेला हूँ फाइटिंग बहुत पसंद लगता है इसलिए ताइक्वांडो चूज़ किया है इसलिए ताइक्वांडो खेला है मैं My name is Wangoloima. I play taekwondo. I've been playing for 7 years. I got bronze medal in Commonwealth Championship and bronze medal in National Games. Great. So कब से खेल रहे हो आप? Like since when have you been playing taekwondo? Since 1999. Okay, so you've always preferred taekwondo. Like why taekwondo? Other than other sports, like why not other sports? I love taekwondo. Okay, so you love taekwondo. So you love fighting. Yeah.
मेरा नाम लाइमराम जयप्रा चन्नू है और मैं टाइकोंडो 2004 से खेल रही हूँ और मैंने कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप जो इंडिया में हुआ था उसमें मेरा ब्रॉन्ज मेडल है और मैं सीनियर में मेरा सिल्वर मेडल है, जूनियर में मेरा गोल्ड मेडल है, यूनिवर्सिटी में मेरा गोल्ड मेडल है। So कितने साल से खेल रहे हो आप? 2004. So why only taekwondo? Any particular reason? एक reason जो? Yeah, I love taekwondo and this for girls we can save ourselves. Self defense. Self defense for self defense. Okay. That's important for girls. Sports is in the blood of Manipuris. From early in the morning, you can see people jogging on the streets and young people training in all disciplines. What is that about Manipur that is producing so many sports persons, so particular footballers? So what is that about Manipur? Not only in football, but in Manipur we are participating in different disciplines. Say archery, cycling, judo, taekwondo, sepak takraw, football. But it is mainly, that means all the guardians are completely realized. Because if you play in a simple I-League also, they are getting a lot of money also. No, this is a great motivation to the public. But in our Manipur, that department, I am working in the sports department as a football coach. But every year we are used to giving incentive from those national competition runner winner. Then in the in different age group, different discipline. Every year, the department is providing to give the incentive those who are achiever. At present, more than 100 players from Manipur are playing in different clubs in the I-League team. We are participating in what school games, then from the All India AIFF national competition also. But very recently, from the All Manipur Football Association also, we are sending many boys from here for participating in different age group. But so far, that regarding Santosh Trophy, that is not up to the level. What under school boys or under 17 age group category, we are participating. But regarding mainly achievement of the women's are very good in, but the national competition camp is also going on in Mumbai, because out of 35 girls from more than 10 girls are also participating. They are going to exposure trip in China, but it's not yet final team is not yet announced by the AIFF. To find out the potential boys, the selection is under process. But already in 4 is already in the under 16 Kailani Academy. Okay. But from this point of view, that the EMFA, as per guidelines from the All India Football Federation, School Games Federation, that those who are that very potentially talented boys, we are going to select, we are going to scout for attending in the national camp for the under 17 World Cup. Mainly support from the state government. For attending in any national games, also in participating in different competition also from the department. Even Youth Affairs and Sports, the department concerned with the All Manipur Football Association. Every boys and girls we are providing their fooding, lodging, everything to and fro also. So we can see why the state produces many popular footballers like Raniji Singh. There is an active training program in place. But what is the condition of training for hockey? In the national stage, Manipur is somewhat low in standard in the senior national, and in the junior, sub-junior we are very good. But in the Indian team, we got 2 or 3 in the men and in the women team. Many talented players are in our state, but due to lack of competitive matches, here Manipur is a small state, so competitive matches and the communication is very far. So competitive matches are less. So many players from our state are joining the other states and the department. Compared to football, hockey lack attraction or enthusiasm from other persons. So sponsorship is very less.
So if we have sponsorship, we can manage many tournaments and it will develop. So the government has lately announced that they'll start a new sports university in Manipur. So what do you have to say about it? Are you like... It is a very good idea. It is a very good project. I wish it will develop more in sports and it will dominate in India as well as in the international area also. You're watching Northeast Interface from Imphal. We are slipping into a break. किरण, happy birthday. हमारा घर. Happy birthday मम्मा. तुम्हें कैसे पता? रोज बोलती थी ना, हमारा घर हमारा घर. SBI होम लोन्स में हम भी पढ़ लेते हैं आपके मन की बात, इसलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स किए हैं कम, खासकर महिलाओं के लिए. SBI होम लोन्स. मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी. मैं नहीं देखूंगी तुम्हारा मोबाइल. तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है. जब भी कॉलेज जाने की बात करो, इसका चेहरा उतर जाता है. कुछ तो गड़बड़ है. नहीं नहीं, नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे. चिंता वाली कोई बात नहीं. चिंता की बात है भाई साहब. रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए. एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें. एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें. पहले ना बोलते थे, ना देखते थे, ना सुनते थे, चुपचाप सहते थे. महात्मा गांधी नरेगा के साथ शुरू हुआ ग्राम सभा द्वारा आयोजित सोशल ऑडिट यानी जनता का खुला मंच. अब हम पूछते हैं अपने काम और मजदूरी से जुड़े सवाल. देखते हैं सरकारी कागज, बिल, मस्टर रोल और सुनते हैं जवाब अपने सवालों के. रोजगार गारंटी से जुड़ी हर शिकायत, हर सवाल पूछने का एक मंच, सोशल ऑडिट. मैं तो सारे मैसेज पढ़ूंगी. मैं नहीं देखूंगी तुम्हारा मोबाइल. तू कब आया मोनू? अब तो मोनू के कॉलेज वापस जाने का टाइम आ गया है. जब भी कॉलेज जाने की बात करो, इसका चेहरा उतर जाता है. कुछ तो गड़बड़ है. नहीं नहीं, नया स्टूडेंट है ना, तो सीनियर तो रैगिंग करते ही होंगे. चिंता वाली कोई बात नहीं. चिंता की बात है भाई साहब. रैगिंग जैसे गंभीर मामले को नजरअंदाज मत कीजिए. एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और उनसे सलाह और सहयोग लें. एंटी रैगिंग हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5522 पर कॉल करें. आपके घर, गाड़ी, शॉप और स्वास्थ्य की सुरक्षा अब हो गई है और भी आसान ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ. ओरिएंटल इंश्योरेंस. While football and hockey are being promoted, one now associates Manipur with boxing, the land of Mary Kom. ये मैंने कहता, ये कई लोग बड़े बड़े थिंकर लोग कह के गया है कि बॉक्सिंग इज फादर ऑफ गेम. तो मेरा कहने का मतलब है कि इसमें कई लोग बोलते हैं कि बॉक्सरों को दिमाग नहीं होता, ये नहीं होता. मैं बोलता हूँ बहुत कुछ इसमें दिमाग का ज़रूरी है. ये हम इनको बोलते हैं और हम भी इस तरह से हमारे कोचों ने सिखाया कि ये गेम जो है, हम हर चीज़ आ गया, टेक्निक आ गया और सब कुछ स्टैंड है, लेकिन क्या है, हाथ से मत खेलो. डोंट फाइट विद योर हैंड, फाइट विद योर हेड बोलते हैं. दिमाग का बहुत ज़रूरी है इसमें. हमारा नेशनल स्पोर्ट्स अकादमी का क्लास 6 से एडमिशन किया है. क्लास 6 में 12 बॉक्सर्स, 6 बॉक्सर्स बॉयज़ एंड 6 बॉक्सर्स गर्ल्स, 12 बॉक्सर्स इन क्लास 6. अभी पूरा लड़का लड़की मिला के 34. मणिपुर में स्पोर्ट्स ग्लोबल बोर्ड है और टैलेंट भी बहुत है इसमें. मेरे विचार में ये जिन में, मतलब कुछ जिन में कुदरती कुछ भगवान का, ईश्वर का कुछ देन है, इसलिए मैं मानता हूँ. उनको चाहत है और कुछ खेले कूदे और उनमें से वह और अपना खेल कूद की लाइन में अपना ज़िंदगी बनाए, जैसे कि कई लोग बना चुके हैं. और ये आपको पता है कि हमारे यहाँ का लोग बहुत गरीब लोग का है, जो अच्छा परिवार का है, हाई क्लास फैमिली का है, वो खेलता नहीं. खेलता है तो है, लेकिन क्या है, वो लग्जरी बहुत महंगी गेम खेलते हैं. तो यहाँ पर जो है अपना जो मतलब यानी लोअर क्लास फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली जो है यहाँ पर आते हैं, खेलते हैं. और वो लोग चाहते हैं कि ये खेल के मतलब इसी लाइन में अपना ज़िंदगी बनाएं. ये जो है एक
कोच होने के नाते मैं बहुत अच्छा फील करता हूँ कि एक कहाँ अब यानी मेरी कौम पहले कहाँ था और कहाँ पर पहुँच गया। तो ये एक किस्म का एक प्रेरणा है और बच्चों को उनको देख के मेरे को देख करके और बाकी कहीं जो अपना नाम कमा चुके हैं मणिपुर के बॉक्सर उनको देख के उनके प्रेरणा ले रहा है और ये मतलब उनकी तरह बनने का कोशिश कर रहा है। अभी फिलहाल this central government has announced that a new sports university बनेगा यहाँ पे, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी मणिपुर में बनेगा। तो आपका इसके बारे में क्या कहना है? हाउ डू यू लुक एट इट? जी बहुत अच्छा है। ये जो है एक हमारा एक किस्मत है, अच्छा किस्मत है, इसलिए यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने चूज़ किया है और यहाँ पर बनने के बाद जो है मेरे विचार में जो जितना अभी प्रोडक्शन हो रहा है स्पोर्ट्स का इससे अधिक दुगना जो है होगा करके मैं मतलब ऐसे सोचता हूँ। It's very good for us. That was very good news to open a sports university for first time in Manipur, and I think government should take up immediate action on this. Offering we should not lose the offer of the central government. We should have a sports university. This is we deserve to have a sports university because Manipur was what they call other people of the other parts of the country, they call Manipur is a powerhouse of sports, and we deserve to have this university in Manipur. I'm very glad because if it is in our state we have a university, we can produce more and more players, athletes, and we can practice. We can get all facilities for athletes. हमारा वो मणिपुर में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी आने से बहुत अच्छा होगा, मेरे ख्याल से अच्छा है। That's all we have time for in the first part of this two-part report on sports in Manipur. Next week, we'll look at swimming and polo and discuss whether sports can be a career or whether after winning those medals, sports persons find it hard to make ends meet once they hang up their boots.